જૂનાગઢમાં ગ્રહણ મોક્ષ થતા સાધુ સંતોએ કર્યું સ્નાન બાદ ભવનાથ મહાદેવના ષોડશોપચાર પૂજન અર્ચના થયા. જૂનાગઢ ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં આજે ગિરનારની લીલી પરિક્રમા પૂર્ણ થતા યાત્રાળુઓની પાંખી હાજરી હતી. પરંતુ આજે કાર્તિકી પૂર્ણિમા અને ચંદ્રગ્રહણનો સંયોગ હોય ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં જૂના અખાડાથી સંતોએ પગપાળા ભાવનાથના મુગરી કુંડ ખાતે પહોંચી ત્યાં શાહી સ્નાન કર્યું હતું. ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં વધુ એક વખત શિવરાત્રિ દિગંબર સાધુઓની રવાડી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ અંગે વિસ્તૃત અહેવાલ અનુસાર આજે કાર્તિકી પૂર્ણિમા અને ચંદ્રગ્રહણનો સંયોગ હોય જૂનાગઢના ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં અખાડા પરિષદના સંરક્ષણ મંત્રી હરિગીરી મહારાજની આગેવાનીમાં તેના જ મહામંડલેશ્વર મહેન્દ્ર નંદગીરી કિન્નર અખાડાના મહામંડલેશ્વર ભવાની નંદગીરી ભૈરવી નંદગીરી જૂના અખાડાના સભાપતિ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી મહંત દોલતગીરી મહારાજ દિનેશગીરી મહારાજ થાણાપતિ બુદ્ધિગીરી મહારાજ અને તે સહિતના જૂના અખાડા અગ્નિ અખાડા આહવાનના અખાડા અને કિન્નરો ખાડાના વરિષ્ઠ સંતોની આગેવાનીમાં શાહી સ્નાન તેમજ શ્રી ભવનાથ મહાદેવના ષોડશોપચાર પૂજન અર્ચન અને મહાઆરતીનું આયોજન કરાયું હતું. આ તકે અખાડા પરિષદના વરિષ્ઠ સંત હરિગીરી મહારાજ દ્વારા સમુદ્ર મંથનથી શરૂ કરવામાં આવેલ ગ્રહણની પરંપરાનો ઇતિહાસ તેમજ તેમનું મહાત્મય ઉપસ્થિત સાધુ સંતો અને સમાજ શ્રેષ્ઠીઓ અગ્રણીઓ અને અધિકારીઓને સમજાવ્યું હતું. સાથે સાથે આ તકે કુંડુ સ્નાનનું મહાત્મય પણ જણાવ્યું હતું. જૂનાગઢ પોલીસ વિભાગના ઉપસ્થિત ઉચ્ચ અધિકારીઓને શાલ ઓઢાડી તિલક ચંદન કરી ફળોની ભેટ પૂજા આપી સન્માનિત કરાયા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ બાદ ઉપસ્થિત ચારે અખાડાના સંતોને ભેટ પૂજા આપી વિદાય આપી હતી. ભવનાથ તીર્થ ક્ષેત્રમાં વધુ એક વખત મહાશિવરાત્રિના પરંપરાગત યોજાતા શાહી સ્નાન જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ માહોલ જોઈ ઉપસ્થિત દર્શનાર્થીઓ પર ભાવ વિભોર સાથે રોમાંચિત થયા હતા. रिपोर्टिंग बाय शैलेश पटेल जूनागढ़। मैं किन्नर अखाड़ा से श्री भैरवी नंदगिरी महामंडलेश्वर भवानी माई की शिष्य हूँ। आज हम यहाँ परिक्रमा के पर्व पे यहाँ आए हुए हैं और आज यहाँ हमने आरती की और सारे देशवासियों के लिए प्रार्थना की। भगवान सबके बाल बच्चे सही सलामत रहे, भगवान सबके घर में अन्न दे, सबको सही सलामत रखे। और हम सबसे यही प्रार्थना देशवासियों से करना चाहते हैं कि प्रकृति का ध्यान रखो। आने वाले समय में ये बड़ी आपदा हो सकती है, प्रकृति का नष्ट होने जा रहा है। आप प्रकृति का ख्याल रखो। और मेरा यही संदेश है कि हर इंसान के घर के बाहर 2 पेड़ लगने चाहिए। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पूरे देशवासियों को आज के दिन आशीर्वाद है। इसके साथ जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। આજે ગ્રહણ હતું અને ગ્રહણ પૂરું થયું એટલે ત્રણેય અખાડાના તમામ સાધુ સંતો સંન્યાસીઓ મળી આમ તો ભારત વર્ષની અંદર તમામ પ્રકારની જે ઉત્તમ પ્રકારની નદીઓ આવેલી છે, જે પાવનકારી અને પવિત્ર નદીઓ છે, તમામ નદીઓની અંદર તમામ પ્રકારના સાધુ સંતો અને માનવ સમુદાય ગ્રહણ પછીના યોગમાં સ્નાન કરતા હોય છે। અહીંયા પણ જૂનાગઢમાં ગિરનાર ક્ષેત્રમાં ભવનાથ સ્થિત જે મુરગીકુંડ આવેલો છે તેમાં આજે ગ્રહણ પછીના સમયની અંદર મંદિરને ખોલવામાં આવ્યું, મંદિરને અને ભગવાનને સ્નાન કરવામાં આવ્યા। તમામ અખાડાના તમામ દેવી દેવતાઓને સ્નાન કરાવ્યું, જે અનંત યુગોથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે અને એ પરંપરાનો નિર્વાહ કરતા આજે જ ફરી પાછું એ જ અમે ગ્રહણની પછીનું સ્નાન ભગવાન ગુરુદત્ત ભગવાનની પાલખી અને તમામ દેવી દેવતાનું સ્નાન મુરગીકુંડની અંદર કરાવ્યું અને આ જે પરંપરા છે તે આગળ પણ કાયમ ચાલુ રહેશે। નમો નારાયણ। गिरा, उसके बाद हरिद्वार में हिमालय क्षेत्र में गिरा, उसके बाद वो हरिद्वार के बाद प्रयागराज के कुंभी संगम पे अमृत गिरा और देखा कि नहीं, ये अमृत को तुरंत नहीं संभाला गया, ये पृथ्वी पे गिर के नष्ट हो जाएगा। फिर नारायण ने अपनी को उस रूप में आने के बाद वो कलश उनके हाथ देवताओं ने देखा कि नहीं, ये तो स्वयं नारायण। तो नारायण जो थे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, शक्ति का रूप धारण किया और एक अच्छी सुंदर मतलब जो है अप्सरा के तौर पे नारायण का प्रभाव हुआ। उनको देखा तो जो देवता देखा या असुर देखा, दानव देखा, सिर्फ महादेव के लावे और जो ब्रह्मा के लावे उस रूप से कोई बच नहीं पाया। सारे लोग
बोले कि नहीं ये हमको मिल जा, हमको प्राप्त हो जा, हमको प्राप्त हो जा, हमको प्राप्त हो जा, इस प्रकार का तमाम प्रकार विवाद हो। उस समय स्वयं नारायण ने मतलब जो है उस अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया और लेने के बाद जो है क्योंकि असुरों के द्वारा वो कलश का क्षति शुरू हो गया था, क्योंकि वो कई जगह गिर गया, जैसे प्रथमम त्रंबकेश्वर में गिरा कुशावर्त में, उसके बाद वो नमो नारायण। આજે ગ્રહણ હતું અને ગ્રહણ પૂરું થયું એટલે ત્રણેય અખાડાના તમામ સાધુ સંતો સંન્યાસીઓ મળી આમ તો ભારત વર્ષની અંદર તમામ પ્રકારની જે ઉત્તમ પ્રકારની નદીઓ આવેલી છે, જે પાવનકારી અને પવિત્ર નદીઓ છે, તમામ નદીઓની અંદર તમામ પ્રકારના સાધુ સંતો અને માનવ સમુદાય ગ્રહણ પછીના યોગમાં સ્નાન કરતા હોય છે। અહીંયા પણ જૂનાગઢમાં ગિરનાર ક્ષેત્રમાં ભવનાથ સ્થિત જે મુરગીકુંડ આવેલો છે તેમાં આજે ગ્રહણ પછીના સમયની અંદર મંદિરને ખોલવામાં આવ્યું, મંદિરને અને ભગવાનને સ્નાન કરવામાં આવ્યા, તમામ અખાડાના તમામ દેવ દેવતાઓને સ્નાન કરાવ્યું, જે અનંત યુગોથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે અને એ પરંપરાનો નિર્વાહ કરતા આજે જ ફરી પાછું એ જ અમે ગ્રહણની પછીનું સ્નાન ભગવાન ગુરુદત્ત ભગવાનની પાલખી અને તમામ દેવ દેવતાનું સ્નાન મુરગીકુંડની અંદર કરાવ્યું અને આ જે પરંપરા છે એ આગળ પણ કાયમ ચાલુ રહેશે। નમો નારાયણ। भारी पड़ जाएगा। इस तरीके से वो अमृत पिला रहे थे। उसी टाइम जो एक राहु नाम का असुर था और वो तुरंत ही मतलब आके देवताओं के पंगत में बैठ गया और पंगत में बैठने के बाद वो अमृत पान कर लिया, जो कि नारायण महादेव ब्रह्मदेव उनसे क्या छिप सकता था, वो जानबूझ के पिला दिया। जानबूझ के नारायण ने कि असुरों को देवताओं को ऊपर अंकुश हीन न हो जाए, अंकुश बना रहे, इस तरीके से मतलब जो है भगवान नारायण ने चाहते हुए देखते हुए वो अमृत पिला दिया। अमृत पिलाने के बाद तुरंत चंद्रदेव सूरजदेव ने कहा कि मतलब ये महाराज असुर है, तो उसका सुदर्शन चक्र से गर्दन काटा। वो जानते थे काटने बाद 1 से 2 हो जाएगा, तो देवता खुद ही हाथ जोड़ लेंगे कि अब इसको मत काटिए महाराज, नहीं तो ये तो इसका विस्तार हो जाएगा, क्योंकि ये मर तो सकता नहीं, अमृत पान कर चुका है। इसलिए तुरंत मतलब जो है नारायण ने जेव ही उसका गर्दन काटा और तुरंत मतलब जो है 1 के 2 हो गया। देवताओं ने हाथ जोड़ा कि बस महाराज अब इसके ऊपर प्रहार मत करो। पर उसका नाम बताने कारण वो सूरज ग्रहण, और देखिए महादेव ने न्याय किया। न्याय, अच्छे आदमी के हाथ में कोई शक्ति रहता है तो न्याय करता है। उसने कहा बोले महाराज अमृत तो मैंने आपकी मर्जी से पिया, महादेव से कहा, नारायण से कहा और ब्रह्मदेव से कहा और महारानी आर्द्र जो शक्ति आदि शक्ति थी उससे प्रार्थना किया कि हमारा अपराध क्या है। उसके बाद स्वयं तीर्थदेव की इच्छा से उन्होंने कहा कि आप अमर हो चुके हैं और आपका कहीं नाम नहीं खत्म होगा, पुरुषार्थ नहीं खत्म होगा, आप हमेशा रहेंगे और आपकी पूजा होगी, आप स्थान प्राप्त करेंगे, आप महत्वपूर्ण स्थान पर रहेंगे। फिर आप इन्हें समय समय से आप इनको इतनी शक्तिशाली हो, बोले हमारा इतनी शक्ति देव कि मैं सूर्य नारायण को, चंद्रदेव को इनके अपराध का दंड दे सके। इन्होंने मेरे क्यों बता दिया आपको, तो उन्होंने कहा कि मैं शक्ति दूंगा, तुम्हारा प्रभाव बना रहे, पर ये है कि इन्हें खत्म करने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने अमृत पी लिया है ऐसे इन्होंने भी अमृत पी लिया है। इसलिए ये है कि आप कुछ काल के लिए गिरसत होंगे और आपके इतिहास में नाम होगा, आपका कीर्ति होगा। उस कारण से वो सूर्य नारायण को ओम पर्णम शीर्षाद्योम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्य आय कामर्थ। आज अपने आप में प्राचीन परंपराएं जो कि सनातन का एक रीति रिवाज होता है, किसी को भी दुखी होके दुखी व्यक्त करना, किसी के दुख में शामिल होना, उसके साथ खुद भी दुख का एहसास कराना,
उसको महसूस करना, उसको पीड़ा को समझना। इसी प्रकार से आज देवी देवताओं को और तमाम चीज़ें, आधार को, सत्यता को किसी गलत आदमी के हाथ में शक्ति न चली जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे आदमी के हाथ में तलवार दिया जाएगा तो मानव की रक्षा करेगा, जीव मात्र की रक्षा करेगा, पृथ्वी का भगवान कहलाता है। इस तरीके से गलत आदमी के हाथ में चला गया तो उस तलवार का दुरुपयोग हो सकता है, शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है और मानव को विनाश कर सकता है, जीव मात्र का हत्यारा हो सकता है। एक हिंसक पागल की तरह वो व्यक्ति शक्तिशाली वो किसी रूप में है, एक हिंसक जानवर के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छे संत, महापुरुष और देवी देवताएं किसी नाम से जाने जाए, वो चाहते हैं गलत आदमी के हाथ में शक्ति न चली जाए। इसी परंपरा को समुद्र मंथन के समय से ये प्रक्रिया आरंभ हुआ। भगवान नारायण अर्धनारेश्वर बने। अर्धनारेश्वर बनने के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। तो दोनों ही एक पिता की औलाद हैं, चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो, और दोनों एक पिता होने के कारण और दोनों महादेव की इच्छा से वो शुक्राचार्य बृहस्पति दोनों सगे भाई थे। अब भाई होने के कारण वो दोनों गुरु पद पे प्राप्त हुए थे। तो ये हुआ कि शक्तियाँ मिल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो महादेव की आज्ञा से शुक्राचार्य के तमाम व्यवस्था प्रयास से देव और असुर एक साथ आने का निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद उसमें यह हुआ कि जो कुछ निकलेगा वो आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। इस प्रकार